इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1992 में ही इतना एडवांस हो चुका था कि आपके बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को वो कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देता था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ एआई का इस्तेमाल करके अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। डेटा एंट्री जैसे वर्क्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। What is this? It's Microsoft Excel. Now hold still, I'm about to perform a miracle. You're crazy. There's no time. Now Wilson just wants this year, right? First we'll put in the names of the tours. Tennis, golf, safari. Total. Right. Q1, Q2 ought to do it. She wants to see a 10% growth. Yeah. I'll work up the first 2 quarters. I got it. I got it. We could tell her that you got mugged on Friday night. Nah, she'd want a police report. Click on the auto sum? Hey, you only have 2 quarters here. Aren't you going to finish it? No, but Microsoft Excel is. Watch this. It's called autofill. It's going to finish the table for me. I just drag this little cross as far as I want the data extended. Check it out. Excel picks up on trends, totals, quarters, dates, and does the projections for me. My spreadsheet doesn't do that. Very cool. Autofill.